Hi all, welcome to PTL Computer Institute. So, as you know, I am Mukti, the faculty of computer, PTL Computer Institute, and today agenda is we will discuss about the memory and how we'll use that memory and what is the requirement of memory, and post that types of memory, basically how the memory is categorized, in which basis that is categorized. Post that we will also if time permits, we will also describe each and every part of your memory. Okay, so let's start. Memory. So what is memory actually? Memory is actually divided into three parts in general. One is your primary, secondary, and then is there cache memory or auxiliary memory, you can say cache. C.Cache memory. Okay, primary memory is basically the ROM and RAM. Okay, MARY, primary. What are secondary memory? Secondary memory is nothing but HDD, hard disks. It looks something like hard disks. Then SSD. Okay. What else? Cache memory is like level 1, level 2. Level 1 cache and level 2 cache. Then again RAM is divided into two parts. What are that? SRAM and DRAM. And ROM is kind of, what is about ROM? Mask ROM, mask ROM, then EROM. What else? EPROM. Next is EEPROM, right? Mass ROM, then PROM means nothing but programmable ROM. Programmable read only memory. This is erasable, programmable, erasable, programmable, read only memory. EEPROM, electrically erasable, electrically erasable, programmable, programmable, read only memory. Okay. What was SRAM? SRAM stands for static RAM. STATIC, static random access memory, but static RAM. Whatever DRAM, dynamic RAM. Okay, this is level 1 cache and level 2 cache. And HDD stands for hard disk. SSD stands for solid state drive. Solid state drive. Okay, clear?
तो आम सब कौन करवा ये डिटेल को कौन कर कवर करवा वन बाय वन तो टाइम परमिट देला तार आम आज कंप्लीट करिया अदरवाइज जहाँ रहिबो रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करिया ओके देन मेमोरी कौन मेमोरी यूज कौन मेमोरी कहीं पढ़िया आम मेमोरी यूज कौन टू स्टोर आवर इनफॉरमेशन फॉर फ्यूचर एक्सेस जब फ्यूचर किसी यूज किसी नहीं कैलकुलेट करार अच्छी मोर फ्यूचर ताकू यूज करने कौन करी मु फ्यूचर एक्सेस करने कौन करी स्टोर करी डाटा फॉर द स्टोरिंग पर्पस व्हाट आई नीड द स्टोरेज एंड मेमोरी इज नथिंग बट द स्टोरेज ओके मेमोरी कौन सिंपली मु किसी डाटा स्टोर करने कौन यूज करी मु मेमोरी यूज करी ओके तो बेसिकली मेमोरी है तीन प्रकार गोटे है प्राइमरी देन सेकेंडरी देन योर कैशे मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कौन द मेमोरी व्हिच इज able to hold till the computer is power on जब कंप्यूटर मोर पावर ऑन अच्छी से जाए कौन करो से डाटा को तुम होल्ड कर पारो के प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कौन कर पारो प्राइमरी मेमोरी जे कौन वोलेटाइल मेमोरी माने कौन भूली जो से पावर ऑफ डाटा गन डाटा नहीं किछि हो देन सेकेंडरी मेमोरी कौन तुमरो नॉन वोलेटाइल बा परमानेंट स्टोरेज कौन कर पारी मु the information or the data will remain there until you forcefully delete the data जब तो निजे आ delete करी न सजा तुम कौन रहबो डाटा रहबो कोडी in your secondary storage okay तो secondary storage अगेन के कौन कौन हे पारियो उटे हार्ड डिस्क हे पारियो बा एसएसडी हे पारियो ओके सेडा ला तुम कौन secondary storage then हम आगु पढिबा उटे प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी भीतर कौन हुए जो परफॉर्मेंस कौन बहुत भैरी करे माने धर मोर डाटा मिललानी कौट सेकेंडरी स्टोरेज में डाटा नहीं सॉरी प्राइमरी स्टोरेज में डाटा नहीं डाटा से कौट खोज जाएंगे इन द सेकेंडरी स्टोरेज तो सेकेंडरी स्टोरेज डाटा आसवा जाए आ तुम कौन है प्राइमरी मेमोरी पहुंची पुणी तुम सीपीयू गला बेलू सीपीयू कौन कर आइडल बसो जनरली सीपीयू स्पीड जी आ तुम मेमोरी एक्सेस माने तुम प्राइमरी मेमोरी जो स्टोरेज डाटा जो रीड करवा ता टाइम टा बहुत अधिका का ठारू सीपीयू ठारू तो कौन हुए सीपीयू कहला अपा डाटा नहीं कहला सिंपली बसिला आइडल ही बसिला तो से जो आइडल टाइम टा कम करिया पे हमर कोन आसला ऑक्सिलरी मेमोरी बा जा काम कौन कहला हेल्पिंग मेमोरी बा जा काम कौन कहउछंदी कैशे मेमोरी ओके जो हेल्पिंग मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी जो आसला ताकू केमती यूज करा होला थ्रू द कैशे मेमोरी अगेन कैशे इज आर ऑफ टू टाइप्स व्हाट आर दोस लेवल 1 कैशे एंड लेवल 2 कैशे केमी सेवन इंप्लीमेंट होउछंदी हम गोटे फ्लो देखिबा से फ्लो उतर हम डिस्क्राइब करिबा डाटा केमती रीड होउछि केमती राइट होउछि को कंपोनेंट्स मेमोरी रो ता भीतर कम्युनिकेट करूछंदी से कम्युनिकेशन लो हेड किए ओके डिटेल हम पढिया तो फर्स्ट लेखो मेमोरी ओके मेमोरी इज नथिंग बट memory is nothing but a data storage memory is a data storage which comes in the form of chips 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 and which is able to hold the data or the information for future use or for future access okay okay next the memory is categorized into three different parts
three different parts such as structure करचो structure कर देते तो पूरा such as main memory और primary memory और internal memory and second one is secondary storage okay, secondary storage. Then the third one is the cache memory. प्राइमरी मेमोरी आउ गोटे आसे गोटे कौन CMOS गोटे आसे CMOS complementary metal oxide कौन semiconductor memory okay CMOS complementary metal oxide semiconductor memory एटा कार फुल CMOS ओके तो मोर प्राइमरी मेमोरी केते प्रकार तीन प्रकार है कौन कौन CMOS ROM आउ RAM फर्स्ट लिख ROM ओके ROM कौन होला ROM फुल फॉर्म कौन ROM stands for read only memory. ROM stands for read only memory. Okay. ROM is subcategorized into before that ROM is essential ROM stands for read only memory. Okay, it is an essential component of memory units. Okay, as we know, next point, as we know, the computer is a machine, hence it does not have any intelligence on its own. Therefore it requires some instruction to operate it and that instruction is stored
in the ROM. In the ROM. Okay. As the name suggested, as the name suggested, as the name suggested, we can only able to read, we can only able to read the contents, we can only able to read the contents available in the memory. That's why it's known as, sorry, available in the memory. That's it. Okay. তাহলে রম রক্ষে কোন, রম রক্ষে কোন তাহলে? যা ইউজর ପାଇଁ দরকার, কম্পিউটার ପାଇଁ ଯିବା ଦରକାର। Look, in general, in general, in general, ROM holds the program like basic input output system, BIOS যা কোন। ओके, BIOS, ये BIOS प्रोग्राम किए रखियो तमरो ROM रखे। तो BIOS stands for basic input output system। ओके, एटा किए होल्ड कर तमरो ROM होल्ड करियो। ओके, नेक्स्ट। तो ये काम कोन, BIOS रो काम कोन? बुटिंग प्रोसेस पढ़थिले। BIOS रो काम कोन क्वाइट लाइट? कोन काम BIOS रो? तो बेसिकली BIOS रो काम कोन? जते मोर कंपोनेंट्स थिबो से कंपोनेंट मानो कोन करिवो से चेक करेबो, आर दे आर रेडी फॉर वर्क और नॉट, माने कोन कीबोर्ड, माउस, ओके, मॉनिटर, ओके, देन तुम कोन आसो धर फ्लॉपी डिस्क किछ अछि नले तुम हार्ड डिस्क अछि, से माने काम करतोंदी कि नै, से माने रेस्पॉन्स दोचोंदी कि नै, फर्स्ट ताको चेक करिवो, कर साला पर जदी दे आर ओके देन ओनली दे प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। तो BIOS काम कोन से कोन करबो, जति मोर सो डिवाइस कनेक्टेड अछन सिस्टम सहित के कीबोर्ड हला, माउस हला, मॉनिटर हला, ओके, देन तमर फ्लॉपी डिस्क हला, हार्ड डिस्क हला, बा एसएसडी हला, से मानु से कोन करिवो चेक करेबो से कंपोनेंट सब काम करचोंदी कि नै, माने बेटर स्टेज अछोंदी कि नै, जदी ना हंती से माने कोन करिवो से आगु प्रोसीड करेबो नै, ताको रिपेयर करिवो ट्राई करिवो। ओके, नले कोन करिवो एरर मेसेज दो का को टू द यूजर, दिस डिवाइस इज नॉट वर्किंग, सो ट्राई टू यूज सम अदर डिवाइस और टू restart your computer kind of things। okay, से तुम कौन करो स्टार्ट करेबो। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, तो ए जो BIOS वाला केतर नेक्स्ट वाला कोन तमरा बूटिंग प्रोसेस हेला, से जो प्रोग्राम, ओके, सेमती जो प्रोग्राम जोडा कोन सिस्टम मोर स्टार्ट हले से हम यूज करबी, तो सिस्टम स्टार्ट पय जो जो जिंस दरकार, जो जो प्रोग्राम मो दरकार, से प्रोग्राम से के होल्ड करिवो, ROM होल्ड करिवो। ओके, नेक्स्ट, तो ROM कोन करले रीड ओनली मेमोरी, माने हम कोन करे केवल हम रीड करूछन ताको, ताले कंटेंट आछू कोड के जन लिखु दो ना, आमे तो लिखु नांती, ताले आइला कोड कंटेंट, कंटेंट आइला कोड आ जन प्रोग्राम करछ, के प्रोग्राम करला, केतल प्रोग्राम हला केतल, ओके, एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग करछन तो तुमरो ROM बना होउची, से समय कोन करछोंती लोक जनरल नॉर्मल लोक को जो जो यूजफुल जिंस अछि ताकु समान कोन करछन प्रोग्राम करछन टू द ROM। तो सही जो ROM को कोन कहला हमरो मास्क ROM,
Okay, so max ROM is nothing but the ROM which is programmed at the time of development, at the time of manufacturing. जो manufacturing करा होचे सेटा हम कोन करूची ताको प्रोग्राम करूची for the normal use. Okay, लेख max ROM लता पूर्व ROM is divided into four different types. Four different types. Four different types. Four different types. Number one, max ROM, then PROM, EPROM, and EEPROM. Okay, max ROM, PROM, EPROM, and EEPROM. Clear? Next, next max ROM. What is max ROM? Max ROM is nothing but 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 the ROM which is programmed at the time of manufacturing, which is programmed at the time of manufacturing. Okay, ଯେତେବେଳେ ବନା ହଉଛି ROM ସେଇ ଟାଇମ୍ ରେ କ'ଣ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଦଉଛି. Clear? Next, PROM. तो यार डिसएडवांटेज कौन मैक्स ROM रो डिसएडवांटेज कौन मैक्स ROM डिसएडवांटेज कौन ये ऑलरेडी लेखा है कि आछी तो मोर किछि तो अलगा रिक्वायरमेंट अछि मु लिखि परिबि कि अलगा रिक्वायरमेंट किछि लिखि परिबि कि मु लिखि परिबि तो प्रॉब्लम कोन होबो मो हिसाब मु तो चेंज कर परिबि नै ताल कोन होबो जो ताल म कोन दरकार एमती गोटे ROM होवा दरकार जे कोन कर पारे मु तो एटलीस्ट मो हिसाब मु तो प्रोग्राम कर परिबि. ओके, तो एही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा पय कोन आसला हमरो PROM. और डिसएडवांटेज लिखो फर्स्ट मैक्स ROM रो disadvantage of max ROM. Disadvantage of max ROM. Okay, as for the sorry, just a minute. Yeah, as the max ROM is programmed at the time of manufacturing, programmed at the time of manufacturing, we can't change according to our requirement. Okay, our requirement is हम कौन कर परिवान ताको चेंज कर परिवान. To overcome that problem, PROM is come into market. PROM came into market. Okay. Next, PROM. PROM stands for programmable read-only memory. PROM stands for programmable read-only memory.
programmable read-only memory. That means we can able to program. That means we can able to program the ROM. We can able to program the ROM. Okay, only once. Okay, and the process of programming or writing is known as what? Burn process. BURN. Okay, the process of writing in ROM is known as burn process. Okay, burn process. Next. Here the disadvantage is like a disadvantage of PROM. PROM ର disadvantage कौन? PROM कौन करुचे? लेखिया ପାଇଁ दउची बट प्रॉब्लम कौन? थोरिए लेखियो. इन केस मोर किछि भूल कर देली बा मोर रिक्वायरमेंट चेंज हे गला मु आउ ता कोन कर परिबिनी रीप्रोग्राम आउ कर परिबिनी. ओके like disadvantage of PROM. PROM allows to program the ROM only once. To program the ROM only once. Program the ROM only once. Only once. Okay. If we did any mistake, or or the requirement is changed, changed EDA changed, we can't reprogram. Requirement is changed, we can't reprogram. Okay, we can't reprogram. To overcome this problem, EPROM come into market. So I think we can end with this, and the remaining like EEPROM and EPROM and EEPROM we can continue in the next lecture, and if time permits maybe we'll also complete some other components of memory. The thing is we are trying to make the video very short so that you can enjoy whenever we are seeing the video. Otherwise what will happen, the video will be in that way, you will in your way, so there is no point of recording the videos again. Okay, thanks all, and let us know if you have any error, any issues, any problems, we'll have to solve. Thank you.